So hey guys, yesterday I talked about the LL case. So today I'll be talking about the RR case. This one was the LL case, and today I will talk about the RR case. So for understanding the RR case, let's take an example. So let's take this example like let's say I have a 20, I have 30. The next step is to insert 40. So according to the rule of PST, I will insert the 40 here because it is greater than 20 and greater than 30. So because of inserting this 40, we have changed the balancing factor of these two nodes. Previously, the balancing factor of these two nodes were 20, 30. It was 0 and this was 0, minus 1, minus 1. After inserting 40, it is this is 0, this is minus 1, this is minus 2. So we can see that we have changed the balancing factor of these two nodes, but this node has a balance factor of minus 1, which is permitted in Avl trees. This is not allowed. So we know that in Avl trees the balancing factor of each and every node should be in the range of minus 1, 0 or 1. So we can see this has minus 2. So because of inserting 40, the balancing factor of this node has become minus 2. So what we will do is we will traverse upwards from the newly inserted node till we find a node which has a balancing factor like abnormal balancing factor. Here it is 20. So after finding 20, we will traverse downwards towards the newly inserted node, that is 40, and capture the first two movements. This is the first movement R, this is the R. So this is a RR case. So how we can solve an RR case? So an RR case can be solved by a single right rotation. Sorry, a single left rotation. So what we will do, this single left rotation we can use a single left rotation to solve the RR case. So this node में balancing factor का problem है, there is 20. ये right rotation में left rotation में जाएगा. I want to reiterate जिस नोड में बैलेंसिंग फैक्टर का प्रॉब्लम है वो लेफ्ट रोटेशन में जाएगा. तो वो अगर लेफ्ट रोटेशन में गया तो हम लोगों को मिलेगा 30, 40 and 20. So we can see the tree is now fully balanced. Why? Because the balancing factor of this node is 0, this node is 0, and this node is also 0. So we have balanced the tree. Let's understand the RR case with much details right now. This is an RR case. So this is my C node, this is my B node, this is my A node. Okay, so CPA, T1, T2, T1, T2, T3, T4. So let's say I have inserted an nth node in T3 or T4. So we will traverse upwards right now from the newly inserted node towards the node which has a abnormal balancing factor because of inserting the nth node. So let's see, let's say we have found the node as this C node.
which has an abnormal balancing factor because of inserting the nth node here or here. So we will traverse upwards from the newly inserted node towards the node with the balancing factor of abnormal balancing factor. So it will be more proper to say like this: we will traverse upwards from the newly inserted node towards the node which has an abnormal balancing factor, which happened because of inserting this node only. So we will traverse upwards, and then we will then traverse downwards towards the newly inserted node from the node which has the abnormal balancing factor. We will traverse downwards and capture the first two movements. This is R, this is R. So we can see the node which has the problem is C. C has the problem, like C has the abnormal balance factor. So the solution will be rotating the node with the problem. We will rotate, let me write clearly, in RR case we will rotate the node C with a single लेफ्ट रोटेशन. मतलब जिस नोड में प्रॉब्लम है उस नोड को रोटेट करेंगे लेफ्ट, सिर्फ इस नोड को, और कोई भी नोड में हम हाथ नहीं लगाएंगे. तो इसको अगर हम इधर लाएंगे, लाइक लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो बी हो जाएगा पेरेंट, उसके अंदर सी आ जाएगा, और बी के जो T2 था, सी का ये T1 था, वो बी का जो T2 था वो इधर आ जाएगा, बी का जो ए था वो इधर रहेगा, ए का जो T3 T4 इधर रहेगा. तो ये बैलेंस हो गया पूरा. तो अगर हम ये कोड करेंगे तो मेरे को पहले पता चलना चाहिए कि ये RR है. तो अगर ये RR है तो ये RR कैसे पता चलेगा? तो ये RR पता करने के लिए इफ़ कंडीशन टू सेटिस्फाई RR केस, वो कंडीशन होगा क्या? C और ये इसका बैलेंस फैक्टर -1 होगा. तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ C विल बी लेस देन -1. क्यों? अगर 0 -2 हुआ उसका मतलब यही ना कि इधर ऐड किया, इसलिए इधर -1 से -2 हुआ, एक ऐड हुआ है, इसलिए ये होगा, ऑलवेज -2 होगा इसका. RR के इफ इट इज़ एन RR केस, लाइक इफ इट इज़ 3 इट इज़ 5. अगर पहले 4 था मतलब ये कम था, मतलब इधर ही ऐड हुआ है, इसलिए ये -2 हुआ है. और जो आइटम हमने इंसर्ट किया है, आइटम मतलब n, वो सी डॉट राइट से ग्रेटर होगा, सी डॉट राइट डॉट डेटा, मतलब बी के डेटा से वो बड़ा होगा, इसलिए ना राइट में गया है. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा RR केस के लिए. मतलब RR केस आइडेंटिफाई करने के लिए इट्स बेटर टू से लाइक कंडीशन टू आइडेंटिफाई ए RR केस. तो अगर इसमें कोड करेंगे कैसे? तो ये कोड करने के लिए ये मेरे को कॉपी कर लेने दीजिए एक बार. बी के लेफ्ट को हम सी बनाएंगे, तो T2 को हम स्टोर कर लेंगे. T2 क्या है? C डॉट राइट डॉट लेफ्ट, ये हम स्टोर कर रहे हैं T2 में. अब C डॉट राइट डॉट लेफ्ट को, C डॉट राइट मतलब B, राइट डॉट लेफ्ट मतलब T2,
उसके जगह हम सी को डाल देंगे, मतलब ये अभी नहीं है, यहाँ पर सी आ गया, सी के साथ T1 भी आ गया इधर। अब क्या करना है, सी डॉट राइट में T2 को डाल देना है इधर, बस हमारा काम हो गया। यही है ना, क्योंकि इधर सी हटा के सी आ गया, T1 T2 जो इधर था वो सी के राइट में आ गया, T1 T2। और ये ए को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, द इट विल बी सेम एज बिफोर, so this will be the code, and this the resultant tree will be B, C, A, T1 T2 T3 T4, and the code will, the function that does this left rotation will return the B node, that is the root node right now. Also one thing we have to do is like we have to find the height of C and B again. For the height of C, it will be the height of the maximum of the height of the left subtree and right subtree, and for B it will be the maximum of the height of the left subtree and right subtree. Also, you have to find, after this rotation, we have to recalculate the height of C and B. So this is how to handle the RR case.